एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम आईपीसी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज ए प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद लोकल एरिया ऑफ सच जुरिस्डिक्शन, बी अ प्लेस वेयर सच पर्सन इज फाउंड, सी नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ए है, प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन लोकल एरिया ऑफ सच जुरिस्डिक्शन। सेकंड देखेंगे, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये लॉर्ड मैकेलोने के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो 2 का सी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, द इंडियन पिनल कोड इज डिवाइडेड इनटू। जो इंडियन पिनल कोड है उसमें टोटल 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस है, तो इसका डी करेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, द इंडियन पिनल कोड 1860 केम इनटू इफेक्ट एग्जिस्टेंस फ्रॉम ए 6 अक्टूबर 1960, बी 5 अक्टूबर 1980, सी 1 में 1990, डी 6 दिसंबर 1960। तो इसका फर्स्ट करेक्ट है 6 अक्टूबर 1960। फिफ्थ देखेंगे, द इंडियन पिनल कोड 8060 इज एक्सटेंडेड टू ए ऑल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बी ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, सी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। सिक्स देखेंगे, एक्स वाई जेड द पर्सन हैविंग सफिशिएंट फूड बट गोज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू अ बेगर हु डाइज ऑफ हंगर, एक्स वाई जी जेड इज गिल्टी ऑफ ए मर्डर, बी अटेम्प्ट टू मर्डर, सी कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, डी नो ऑफेंस। तो इसका आंसर है डी नो ऑफेंस। सेवन देखेंगे, फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, A, when person must instigate the other for the commission of an offence, B, there must be an intentional aid by one person to another for the doing of an offence, C, some act or illegal omission must take place in pursuance of an engagement between two or more persons to do an unlawful act, D, none of the above। तो इसका आंसर C करेक्ट है। 8 देखेंगे, A and B agreed to commit the murder of C by poisoning and D was to procure poison but he did not procure it. A and B are guilty of A, no offence, B, criminal conspiracy to murder, C, abatement of murder by conspiracy, D, attempt to murder with the aid of section 34 of IPC। तो इसका आंसर C करेक्ट है। 9 देखेंगे, X threatened to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives you money. He thus induces Y to give him money. Here X has committed the offence of A, defamation, B, mischief, C, criminal intimidation, D, extortion। तो इसका D करेक्ट है। 10 देखेंगे, A by putting B in fear of grievous or dishonestly induces B to sign for affix his seal in black paper and deliver it to A. B signs and delivers the papers to A. A has committed A, extortion, B, robbery, C, cheating, D, dacoity। तो इसका A करेक्ट है, extortion। Criminal conspiracy is an agreement between two or more persons to A, to do or cause to be done an illegal act, B, do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, C, commit an offence, D, none of the above। तो इसका B करेक्ट है। 12 देखेंगे, अंडर सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ए commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises and continue as long as that apprehension continue. B, commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises and continue even after the apprehension causes. C, commences only when the assault is actually done and continues during the period of assault. D, commences only when the assault is actually done and continues after the assailant has left। तो इसका A करेक्ट है। 30 देखेंगे, इन केसेस ऑफ किडनैपिंग एंड abduction द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स वॉलेंट्री कॉजेज ए, एनी हार्म अदर देन डेथ, बी, एनी हार्म अदर देन डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, सी, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ, डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। 14 देखेंगे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल ए, अगेंस्ट एन इंसेन, बी, अगेंस्ट अ चाइल्ड, सी, वेयर देर इज अ टाइम टू रिकोर्स द पब्लिक अथॉरिटी, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। 15 देखेंगे, एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी A, against any offense affecting the human body, B, and the body of his friend against any offense affecting the human body, C, and the body of any person against any offense affecting the human body, D, and the body of his blood relative against any offense affecting the human body। तो इसका आंसर C करेक्ट है। 16 देखेंगे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ हैज बीन डील विद अंडर A, सेक्शन 103, B, सेक्शन 102, C, सेक्शन 101 एंड D, सेक्शन 111। तो इसका आंसर A करेक्ट है, सेक्शन 103। 17 देखेंगे, सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग ए, एनी हार्म अदर देन डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, बी, एनी हार्म अदर देन ग्रीवियस हर्ट टू एनी इनोसेंट पर्सन, सी, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन। 18 देखेंगे, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज स्टिल ए, द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज retreat with the property, B, the assistance of the public authorities is obtained, C, the property has been recovered, D, all of the above। तो इसका आंसर D करेक्ट है, all of the above। 19 देखेंगे, the right to private defense
of property extended to causing death is covered under which section? A. Section 103, B. Section 102, C. Section 100, D. Section 97. तो इसका आंसर ए करेक्ट है, सेक्शन 103. 20 देखेंगे. A person is not deprived of his private defense against public servant unless A. He knows or has reason to believe that the person doing the act is a public servant. B. He is not aware of the fact that the person doing the act is a public servant. C. Their act causes reasonable apprehension of damage to the property. D. Both A, B and C are correct. इसका आंसर ए करेक्ट है. He knows or his reason to believe that the person doing the act is a public servant. 21 देखेंगे. In an assault with intention of committing rape, the right of private defense extends to causing death covered under which section? A. Section 105th, B. Section 107th, C. Section 101st, D. Section 103rd. तो इसका आंसर डी करेक्ट है, सेक्शन 103rd. 22 देखेंगे. Where a wrongdoer commits housebreaking by night, the right to private defense extend to voluntary causing A. Any harm other than death, B. Any harm including death, C. Any harm other than death and grievous, or D. Both A and C. तो इसका आंसर भी करेक्ट है, any harm including death. 23 देखेंगे. The right of private defense is based on the natural instinct of A. self-respect, B. self-preservation, C. self-sufficiency, D. self-reliance. तो इसका आंसर बी करेक्ट है, self-preservation. 24 देखेंगे. The right to private defense is A. unrestricted, B. subject to restrictions contained in section 99 of IPC, C. subject to restriction contained in chapter 4 of IPC, D. both B and C. तो इसका आंसर बी करेक्ट है, subject to restriction contained in section 99 of IPC. 24 देखेंगे. 25 देखेंगे. Basic rule of private defense under section 96 IPC states that A. Nothing is an offence which is done in the exercise of right of private defense. B. Nothing is an offence which is done in the exercise of right of private defense subject to section 99. C. Nothing is an offence which is done in to save one's own life and another's life. D. Both A and B. तो इसका आंसर ए करेक्ट है. Nothing is an offence which is done in the exercise of right of private defense. 26 देखेंगे. The right of private defense is available with respect to A. harm to body, B. harm to movable property, C. harm to movable property, D. all of the above. तो इसका आंसर डी करेक्ट है, all of the above. 27 देखेंगे. What punishment may be awarded to the person whose act is covered under section 100 of IPC? A. No punishment, B. half of the punishment prescribed for that offence, C. 1/4 of the punishment, D. depend upon the discretion of the court. A. इसका आंसर है A. no punishment. 28. In which of the following the right to private defense of property does not extend to causing of death? A. robbery, B. housebreaking by night, C. theft, D. mischief by fire. तो इसका आंसर है C. theft. 29 देखेंगे. In connection with the right of private defense, body give the correct response. A. This right is not available against an unsound person. B. The right is not available against a person below 7 years of age. C. This right is available against any person. D. This right is not available against parents. तो इसका आंसर C करेक्ट है. 30 देखेंगे. Right of private defense of the body extend to voluntarily causing death if the offence which occasion the exercise of right A. reasonably causes apprehension that death will be caused, B. reasonably causes an apprehension of simple hurt, C. recovery to be made from thief who escaped, D. when the person is escaping after causing hurt. तो इसका आंसर ए करेक्ट है, reasonably cause apprehension that death will be caused. 31 देखेंगे. Which is not correct about the self defense? A. Nothing is an offence which is done in exercise of right of private defense. B. Right of private defense is extended to causing death in the case of robbery. C. Right of private defense is extended to causing death in defamation case. There is no right of private defense if there is time to have recourse to the protection of public authority. तो इसका आंसर C करेक्ट है. 32 देखेंगे. In which set of sections of IPC even death can be caused in exercise of right to private defense of person and property? A. section 100 and 103, B. section 100 and 101, C. section 102 and 105, D. section 100 and 102. तो इसका आंसर ए करेक्ट है, सेक्शन 100 and 103. 33 देखेंगे. Under section 98 right to private defense also available against A. person of unsound mind, B. person who does not have maturity understanding, C. both A and B, D. only A. तो इसका आंसर C करेक्ट है, both A and B. 34 देखेंगे. Right of private defense is not available. A. against an insane, B. against a child, C. when there is a time to recourse the public authority, D. all of the above. तो इसका आंसर C करेक्ट है, when there is a time to have recourse the public authorities. 35 देखेंगे. Right of private defense is not available. A. to the aggressor, B. to the person who is attacked, C. to the aggressor against an act done in private defense by the person attacked, D. only A and C are correct. तो इसका आंसर D है, only A and C are correct. 36 देखेंगे. In a case of free fight between two parties, A. right of private defense is available to both the parties, B. right of private defense is available to individuals against individual,
सी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी. डी राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन पार्टी. तो इसका आंसर सी करेक्ट है. नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ईदर पार्टी. 37 देखेंगे. अंडर द इंडियन पीनल कोड अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड A by instigating a person to commit an offence, B engaging in conspiracy to commit an offence, C intentionally aiding a person to commit an offence, and D all of the above. तो इसका आंसर है D all of the above. 38 देखेंगे. Which section deals with dowry death? A section 304 of A of IPC, B section 498 A of IPC, C section 489 A of IPC, D section 304B of IPC. तो इसका आंसर D करेक्ट है. 304B of IPC. 39 देखेंगे. One of the remedies for the false imprisonment is A habeas corpus, B mandamus, C certiorari, D prohibition. तो इसका आंसर है A habeas corpus. 40 देखेंगे. Escape from confinement negligently suffered by a public servant is deal under A section 220, B section 221, C section 222, D section 223. तो इसका आंसर है D section 223 of IPC. 41 देखेंगे. The motive under section 81 of IPC should be A prevention of harm to person, B prevention of harm to property, C both A and B, D either A और B. तो इसका आंसर है D either A और B. 42 देखेंगे. Infancy as an exception has been provided under A section 80, B section 81, C section 82, D section 84. तो इसका आंसर है C section 82. 43 देखेंगे. Section 82 of IPC provides that nothing is an offence which is done by a child under A 6 years of age, B 7 years of age, C 9 years of age, D 10 years of age. तो इसका आंसर है B 7 years of age. 44 देखेंगे. Section 82 of IPC enunciates A presumption of fact, B a rebuttable presumption of law, C a conclusive or rebuttable presumption of law, D none of the above. तो इसका आंसर है C a conclusive or irrebuttable presumption of law. 45 है. A person is stated to be partially incapable under section 83 IPC if he is aged A above 7 years and 12 years of age, B above 7 years and under 10 years, C above 7 years and under 16 years, D above 7 years and under 18 years. तो इसका आंसर A करेक्ट है. above 7 years and under 12 years. 46 देखेंगे. Section 83 of IPC lays down A presumption of fact, B an inclusive or rebuttable presumption of law, C conclusive or irrebuttable presumption of law, D irrebuttable presumption of fact. तो इसका आंसर B करेक्ट है. an inclusive or rebuttable presumption of law. 47 देखते हैं. Under section 82 and section 83 of IPC, an offence is punishable if it is done by a child A of below 7 years of age, B of above 7 years of age but below 12 years if he has not attained sufficient maturity and understanding, C of above 7 years of age but below 12 years having attained sufficient maturity and understanding, D all of the above. तो इसका आंसर है C of above 7 years of age but below 12 years having attained sufficient maturity and understanding. 48 देखेंगे. In every statute, mens rea is to be implied unless the contrary is shown. This view has expressed in A Shiraz versus Duritzen, B R versus Duritzen and Stephen, C Harding versus Prince and D R versus Prince. तो इसका आंसर है A Shiraz versus Duritzen. 49 देखेंगे. Which of the following pair is not correctly matched? A mens rea, R versus Prince, B necessity, DPP versus Beard, C insanity, McNaughton's case, D intoxication, Basudev versus state of Pepsi. तो इसका आंसर C करेक्ट है. insanity, McNaughton's case. 50 देखेंगे. The maxim actus non facit rea nisi mens sit rea means A crime has to be coupled with guilty mind, B there can be no crime without a guilty mind, C crime is the result of guilty mind, D criminal mind leads to crime. तो इसका आंसर है B there can be no crime without a guilty mind. आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. ये आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगी. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.